वेलकम टू द रिव्यू विद महावश। आज जिस ड्रामे का हम रिव्यू और रिकैप करने जा रहे हैं उसका नाम है यक्की का सफ़र। और आज हम यक्की का सफ़र की 28th और 29th एपिसोड्स का रिव्यू और रिकैप करेंगे। सो मच हैज़ हैपेंड इन द पास्ट कपल ऑफ एपिसोड्स। इतना कुछ हुआ है कि आई फेल्ट दैट इट वाज बिफिटिंग कि हम एक फिनाली रिव्यू करें उसका। सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी यक्की का सफ़र के पूरे जर्नी के बारे में वो ये थी कि इट क्रिएटेड अ न्यू टेम्पलेट फॉर प्रोग्रामिंग फॉर द फ्यूचर। यानी एक चीज़ जो हमने ये देखी थी कि पाकिस्तान में जिस तरह के ड्रामे बनते हैं, जिस तरह के सीरियल्स बनते हैं, वो शुरू शुरू में तो 10 से 13 एपिसोड्स तक के लिए होते थे। फिर एक ट्रेंड ये आया कि 20-21 एपिसोड्स तक सीरियल्स जाने लगे और फिर वो पूरी कहानी जो है वो सिमट जाती थी, आगे नहीं जाती थी। लेकिन यक्की का सफ़र में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। जिस तरह इस कहानी को तरतीब दिया गया और फरहत इश्तियाक ने भी इसको सॉर्ट ऑफ दो फेजेस में बांटा, जिसमें एक फेज़ में तो वो पूरा नूरी का सागा है, दानियाल की एक पूरी स्टोरी है, लेकिन दूसरी तरफ आपको जो ज़ूबिया और असफंदियार की स्टोरी है वो देखने को मिलती है। बोथ वर इक्वली रिविटिंग एंड बोथ हैड देयर ओन मेरिट्स टू इट। नाउ व्हाट्स इंटरेस्टिंग इज दैट दिस क्रिएट्स एन आइडिया कि एक ड्रामे को सीजन्स में भी बांटा जा सकता है। यानी एक स्टोरी या एक प्लॉट लाइन को डिफरेंट एंगल्स एंड डिफरेंट सिचुएशंस में एक्सटेंड किया जा सकता है, उसको साल दर साल रिपीट किया जा सकता है स्टोरी को, लेकिन विद डिफरेंट सिचुएशंस, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, different places, locations, things like that. So that's an interesting thing which I found about Yaki Ka Safar. It was very successful. So maybe in the future we will see more drama serials that will be season based rather than just serial based. Oh my god, so many feels between Asfandyar and Zubia. Itna kuch hua, itna emotional roller coaster tha. Something about the story was so charming and so heartwarming. And Ahad Raza Mir's depiction of Asfandyar and Sajal Ali's beautiful, beautiful portrayal of this conflicted, complex, worried, anxious Zubia, as well as somebody who's very strong and actually very in control of her situation despite the fact that she is falling apart. So I thought that was beautiful. The performances by Hira Salman, by Mani, by Farhan Ali Agha, by Sabiha Sumar. All of these people did such an amazing job in creating the story to be believable, into creating that space in the hearts of millions of people. And I think we all want that little bit of romance, that little bit of believability, that जो हम कर रहे हैं, अगर हम कोई अच्छी चीज़ कर रहे हैं या अगर हम कुछ सही कर रहे हैं तो उसका जो एक अच्छा रिजल्ट है वो हमें ज़िंदगी में मिलेगा. एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ द स्टोरी, दैट इट क्रिएट्स दैट बिलीवेबिलिटी. क्योंकि इसमें ये नहीं है कि जिसने सच बोला हमेशा उसको फॉरन रिवॉर्ड मिल गया. जो अच्छे काम करने वाला रास्ता होता है वो हमेशा डिफिकल्ट होता है. एंड दैट्स द लेसन ऑफ द जर्नी ऑफ यक्की का सफ़र के अगर आपको सही काम करना है तो आप ये याद रखें कि हर चीज़ इतनी आसान नहीं होगी, लेकिन स्टिल स्टे ऑन दैट पाथ बिकॉज समहाउ समडे यू विल फाइंड दैट सेटिस्फैक्शन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द पीस इन योर हार्ट. एक छोटी सी बात जो ज़ूबिया ये कहती हैं अपने बारे में, या जो हमें एक फियर नज़र आता है ज़ूबिया के अंदर कि शी डजंट ट्रस्ट असफंदियार, शी डजंट ट्रस्ट एनीबडी अराउंड हर विद हर स्टोरी. वो बस अपने अंदर ही उस पूरी खला को और उस डार्कनेस को समेटे फिर रही थी. इट्स अ वेरी बिग बर्डन, it's a very big trauma to carry on with you, the way that she had been treated by her family, the way that she had been treated by all the people that she was supposed to trust and she was supposed to get protection from. She didn't do that. Now in a patriarchal society इस तरह की protection आप जानते हैं कि थोड़ा सा strengthen ही करती है patriarchy को, लेकिन ऐसी protection भी ज़रूरी होती है. भाइयों की protection, fathers की protection. अगर वो अपनी बहनों बेटियों के बारे में नहीं सोचेंगे या वो अगर अपनी बहनों और बेटियों को उनके हकूक़ नहीं दिलाएंगे तो एक ऑलरेडी कमज़ोर औरत के लिए इन हकूक़ के लिए लड़ना बहुत इम्पॉसिबल होता है. सो इन ज़ूबिया's कैरेक्टर वी सी दैट क्वेश्चन एंड आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एंड हैट्स ऑफ टू फरहत इश्तियाक, हैट्स ऑफ टू शहजाद कश्मीरी, एंड हैट्स ऑफ टू द कास्ट ऑब्वियसली एज वेल. बट आई थिंक द राइटर एंड द डायरेक्टर आर सो इम्पॉर्टेंट इन क्रिएटिंग द स्टोरी, बिकॉज अगर उस स्टोरी में ये चीज़ बड़ी एक फाइन लाइन थी. अगर आप इसको विक्टिम की तरफ ले जाते तो आपको पूरे स्टोरी में ज़ूबिया एज अ विक्टिम ही नजर आती. बट नॉट फॉर अ सेकेंड डिड आई कंसिडर हर अ विक्टिम, एंड दैट वाज द ट्रायम्फ, दैट इवन दो शी was in a victimized position, even though she was somebody who was suffering at the hands of patriarchy, she still rose based on her own strength, on her own redemption. She forgave herself, but she knew that other people did not forgive her. But that forgiving of herself was enough for her to get that strength and to move forward and to find love again. Also love the really sweet angle between Hira Salman and Mani. Love the Geti and Dr. Harun angle. And people who know that Hira and Mani are married in real life, that is Geti and Dr. Harun, so that's something really cute for them, and their little son is also there. It sort
sort of creates a very nice connect with the audiences. As far as the rest of the play is concerned, I think it's one of the most beautiful plays I've seen in this year. And what makes me very happy is that I was somebody who rallied with this play from the very beginning. I was somebody who was attracted to this play from the very beginning. So I'm very happy to see कि एक प्ले जो मैं शुरू से देख रही हूँ उसकी अभी इतनी ज़्यादा फॉलोइंग है. एंड इवन दो आई हैव नथिंग टू डू विद दैट प्ले एज सच, मतलब आई एम जस्ट एन ऑडियंस मेंबर एंड आई एम जस्ट समबडी हु हैज़ बीन रिव्यूइंग इट एंड critiquing it, but even then it gives me so much happiness because it did have very strong elements in the story which I feel need to be more. स्टोरी के अंदर, किसी भी स्टोरी के अंदर जो कि इतनी mass audiences के लिए बन रही है, फ्लफ होना भी ज़रूरी है बिल्कुल, और वो अच्छी फ्लफी एंड रोमांटिक इस टाइप की स्टोरीज भी बनना ज़रूरी है, लेकिन ऐसी इंपॉर्टेंट स्टोरीज भी बनना ज़रूरी है जिनमें रोमांस का एलिमेंट भी हो, जिनमें रियलिटी का एलिमेंट भी हो, जिनमें डिफ़िकल्ट ट्रूथ्स भी हों, लेकिन साथ साथ उनके अंदर ये एक मैसेज भी हो कि एक औरत जो है अगर उसको इस तरह उसने मिस्टेक्स की हैं या कोई भी उससे अगर इस तरह की कोई सिचुएशन उसके साथ हो गई है तो उससे वो राइज़ कर सकती है, उसको राइज़ करना चाहिए. और हमारे माशरे में इस तरह औरतों के साथ जिस तरह का सलूक होता है वो नहीं होना चाहिए. सो यस, द जर्नी कम्स टू एन एंड. थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल द रिव्यूज़. थैंक यू फॉर गिविंग मी योर लवली फीडबैक अबाउट द रिव्यूज़. पॉडकास्ट मैंने की हैं आहद रज़ा मीर के साथ, हिरा सलमान के साथ. मजीद पॉडकास्ट भी इंशाल्लाह ज़रूर होंगी, लेकिन फ़िलहाल आप रिव्यूज़ कैच कर सकते हैं, ये पॉडकास्ट कैच कर सकते हैं पटारी म्यूज़िक पे. इसके अलावा अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं तो आप ज़्यादा अपडेट रह सकते हैं. इंस्टाग्राम इज़ mahwash.ejaz, mahwsh.ajaz. अपना बहुत ख्याल रखिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग दीज रिव्यूज़. थैंक यू फॉर स्टेइंग इन टच एंड लेट मी नो व्हाट यू थिंक. वंस अगेन, टेक केयर. खुदा हाफिज़.